Hi my students. So today we are going to continue our third science chapter, skeletal and muscular system. Already we completed the topics like skeleton, then parts of the skeleton. What are the major parts of the skeleton, like skull, rib cage, spine, then limbs, forelimbs and hind limbs. Then we discussed girdles, pectoral girdle and pelvic girdle. Okay. Then functions of the skeleton. Skeleton gives a shape, strength, then support to our body. Without skeleton, we would not be able to stand or walk or whatever work we have to do. Okay. Then today, now we are moving to start a new session, joints. Okay, joints. So in today's session we will discuss about joints, then type of joints. Okay, so let us start. So joints, actually it is very simple. Joint is that particular point where two or more bones meet together. Okay, joint is that particular point where two or more bones meet together. हमारे बॉडी में जो पॉइंट्स होते हैं, जो एरिया होते हैं, उधर हमारा बोन्स, एक बोन दूसरे के साथ मिलते हैं. ओके, एक बोन दूसरे बोन का साथ मिलते हैं. दैट पर्टिकुलर पॉइंट को हमने जॉइंट कहते हैं. ओके, लाइक इफ यू आर लुकिंग ऑन आवर एल्बो, हमारे एल्बो में देखिए तो 3 बोन्स आर मीटिंग इन आवर एल्बो, लाइक ह्यूमरस है उधर, देन रेडियस है, अल्ना है, ये 3 बोन्स उधर मीट होते हैं. सो ये पर्टिकुलर पॉइंट को हमने जॉइंट कहते हैं. अंडरस्टूड? एंड दिस जॉइंट इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रॉन्ग टिश्यू विच इज़ नोन एज लिगामेंट. ये जॉइंट के चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है. ओके, एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है. ये हमारे जॉइंट को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करते हैं, टेयरिंग से सभी प्रोटेक्ट करता है. सो ये जॉइंट का ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू का नाम है लिगामेंट. ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू को हमने लिगामेंट कहते हैं. ओके, सो जॉइंट, देन एंड दिस जॉइंट विच इज held by a strong tissue that is known as ligament. Okay, then joints are of mainly 2 type, immovable and movable. Movable joints भी होते हैं, immovable joints भी होते हैं. Movable मतलब क्या? मूव कर सकते हैं हमको, मतलब हिला ना सकते हैं. ओके, that is movable joints. Like our elbow. Okay, elbow एक एग्जाम्पल है. देन हमारा शोल्डर एक एग्जाम्पल है. ये जॉइंट्स अभी हमको मूव कर सकते हैं. लेकिन इमूवेबल जॉइंट्स मतलब विच वी कैन नॉट मूव, हमको मूव नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई किया, वी हैव 8 फ्लैट बोन्स ऑन आवर स्कल. हमारे स्कल में हमको 8 फ्लैट बोन्स है, दे आर जॉइंड टुगेदर. सो सच टाइप ऑफ joints are known as immovable joints. हमको ये joints मूव नहीं कर सकते हैं. आप लोगों को सोच से तो ये पता चलेगा. we are not able to move that joints in our skull. Okay, so that kind of joints are known as immovable joints. Okay, movable joints and immovable joints. movable joints मतलब हमको मूव कर सकते हैं. इमूवेबल जॉइंट्स मतलब हमको मूव नहीं कर सकते हैं. सो नाउ वी कैन क्लासिफाई मूवेबल जॉइंट्स. ओके, वी कैन क्लासिफाई दिस मूवेबल जॉइंट्स इनटू 4 टाइप: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट. सो द फर्स्ट type is ball and socket joint. In ball and socket joint, okay, ball and socket joint में जो एक बोन का एंड एक बॉल की तरह होते हैं. ओके, इट्स लाइक ए स्फेरॉइड बॉल एंड. देन दूसरा बोन का एंड एक सॉकेट की तरह, लाइक ए माउथ ऑफ कप. ओके, लाइक ए सॉकेट. Okay, so
क्या हो जाएगा, ये ball like end of one bone, it will fit into the cup like socket of the other bone. Understood? ये बोल की तरह एंड होते हैं बोन, वो बोन किधर जाएगा, ये सॉकेट में जॉइंट होते हैं. सो दैट काइंड ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसका एग्जाम्पल है जो हमारा शोल्डर हमारा शोल्डर ऐसे होते हैं, शोल्डर देन हिप, मेनली हमारा गिर्डल्स, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल्स आर द examples of ball and socket joint. Once again I will tell you, ball and socket joint में एक बोन का एंड एक बॉल की तरह होता है, दूसरे बोन का एंड एक कप का तरह होता है. ये बॉल shaped end it will get fits into cup like socket of the other bone. So that is ball and socket joint. Example, our shoulder and hip. So next one is hinge joint. Hinge joint ये नाम कैसे आया, क्योंकि इट वर्क्स एज ए हिंज इन ए डोर. जो डोर में हिंज कैसे काम करते हैं ऐसे ही ये जॉइंट काम करते हैं. सो इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. इट अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. फॉर एग्जाम्पल एल्बो, नी, फिंगर्स एंड आवर toes. These are the types of hinge joint. Okay. Next type of joint, third type of joint, that is pivot joint. This pivot joint we can found in between the skull and our first two vertebrae. Okay. Actually हमारा neck में हमको ये देख सकते हैं, जो हमारा skull हमारा vertebrae में joint होते हैं. That particular point को pivot joint कहते हैं. And it helps us to move our head in sideways. जो दोनों साइड में हमको मूव कर सकते हैं. Then upward and downward ऐसे मूव कर सकते हैं. So that is pivot joint. It is found in between the skull and first two vertebrae, which help us to move our head in sideways, then upward and downward. Okay. Then the last type of joint, which is known as gliding joint. Okay. Gliding joint, it allows the bones to slide against each other. एक दूसरे के ऊपर it will run smoothly. That particular joint, like we can see on our wrist and in our ankle. wrist में ankle में हमको देख सकते हैं, उधर एक बोन दूसरे के ऊपर स्लाइड होते हैं. Okay, it will move smoothly. So that kind of joints are known as gliding joint. Okay, example, wrist and ankle. So today we learned joints, then movable joints and immobile joints. In immobile joints we can find our skull. Okay, like 8 flat bones है उधर, we cannot move that joints. Then movable joints का example हमने पढ़ा किया, mainly 4 type है, ball and socket joint, hinge joint, then comes pivot joint and gliding joint. So you have to remember the name of these joints and examples also. Okay. So let us wind up today's session. Thanks everyone.